आवाज आ रही है? हेलो या मैम आ रही है, गाइस, आ रही है मैम। हाँ, वर्क होमवर्क में था। हाँ, उसका रूल भी आप बता दो उनको लिखने के लिए। हाँ, मतलब उनको लिखने दे दो। ऑनलाइन वालों के लिए तो भेज दो। हाँ, ठीक है, रुको रुको। नो प्रॉब्लम। आज मेरे साथ में बहुत सारी चीजें हो रही है, इट्स फाइन। Abhishek, Arjun, try to speak. We can't hear you. हेलो एक मिनट। हेलो बहुत लोगों की आवाज नहीं आ रही। हेलो आ रही है? Hello, hello. Try speaking. Am I audible to you guys? या मैम आ रही है आवाज? यू आर या यूर ऑडिबल। Now try speaking. Abhishek, Arjun. Now we can hear you. Yeah. Now you're audible. Okay. The ones who missed the Friday's class, we completed exercise number 2, 4, and 5 from the worksheet. Okay. I hope I had shared the recording. I hope you guys have gone through it. And then we discussed articles. Articles हमारे portion में as such नहीं है, but we still covered it for you guys. Okay. We did exercise number 2, exercise number 3, 5. 2, 3, 5. 1, 4, and 6 was for homework. Okay. Along with exercise number 7 and even 8. समझा? Worksheet में से. Now I'm going to share my screen. And we are going to start with what we had left from. Guys, mute. जब बात करनी होगी तभी अनम्यूट कीजिए प्लीज. Thank you. Krishan ji, I can't see you on the camera. Okay, we had finished this exercise, and this exercise. Okay. Now this video, we are going to come back to it. Okay,
We are going to start with this conversation. Just 1 second. Kanchan and Krishanji, turn on your cameras quickly. Krishanji? Krishanji, I'm going to mark you absent for Friday. For last class also, I have marked you absent Thursday. Okay, let's start. Shall we? Shall we start? Okay. I want Arjun to read Kevin's part and Rekha ji to read Ali's part. ठीक है? Ali. हाँ. Yes, you can start. So, do you gym in the morning? Yeah, I do. Yeah. Use- Yeah, I do. Yeah, I do. Usually come here at 10. Arjun, go on. Really? What? Really? What? I do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. Don't you get home at night? Usually get home at midnight. I skip मत करो. I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant in Market Bay. I'm Kevin. By the way, I'm Kevin. Yeah, by the way, I'm Kevin. Okay, very good. Now the conversation is pretty easy. They are meeting in the gym. We can see that in the picture also. They are meeting each other in the gym. Okay. So हम जब भी यूजुअली जिम जाते हैं हम सबको जानते नहीं है फेसेस पता होते हैं बट वी डोंट नो देयर नेम्स करेक्ट सो he has met Ali and he's asking do you usually come to the gym in the morning because 10 o'clock को जिम कोई आता नहीं है हम सब वर्क पे जाते हैं करेक्ट we all go for our work so that's why he's asking this question she's like yeah I do मतलब हाँ मैं यही टाइम पे आती हूँ I usually come here at 10 okay really तो वो पूछता है really then what time do you go to work she says oh I work in the afternoon I start work at 5 so यहाँ पर वो afternoon 5 को consider कर रही है but 5 is considered to be evening okay then he says wow that is late so when do you get home at night मतलब रात को फिर घर कितने बजे आते हो so she says I usually get home at midnight तो बोलता है midnight that is late what do we mean by midnight 12. After midnight, 12:20. It's 12 o'clock. it's exact time 12 o'clock okay that's why it's very very important it's an exact time जब हम midnight बोलते हैं मतलब रात के 12 बजे और afternoon sorry noon जब बोलते हैं that means दोपहर के 12 बजे noon if I say NOON that is exact time again noon if I say let's meet at noon मतलब दोपहर के 12 बजे if I say let's meet at midnight that means रात के 12 बजे so it's an exact time okay मध्य रात्रि बोलते हैं उसको so midnight that is late what do you do exactly मतलब आप exactly क्या काम करते हो then she says I am a chef the pronunciation is chef I am a chef I work at the Pink Elephant what is Pink Elephant it is a name of a restaurant very good okay then he says that is my favorite restaurant by the way I am Kevin तो अभी यहाँ पर वो खुद को introduce कर रहा है okay understood any questions over here anything that you did not understand no okay it's pretty easy now let's listen to the same
conversation first, then we will listen to the second part of the conversation. Okay. What time does Kevin get up? Is it audible for everyone online? Yeah. Okay. Start work. Okay, 1 second. And what about you, Kevin? Kevin gets stop. So, Listen and practice. so, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, well that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay. Understood? Any questions here? Did you focus on the pronunciations? Rekha ji and Arjun ji? हमारे क्लास में बहुत सारे ए से नाम स्टार्ट हो रहे, कंफ्यूजिंग है बहुत. आदित्य, अर्जुन, अभिषेक. Okay. Next, now we will listen to the next part of the conversation. Here you have to focus. What time does Kevin get up and what time does he start work? Okay. And remember, you have to answer in full sentences. One word answer नहीं देने. उसी के नीचे का 7 के नीचे का second part of the conversation. Page 11, exercise 7, part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up? Start work. And what about you, Kevin? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up at 6 o'clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon. So where do you work? At the Hungry Student Restaurant near the university. I'm a dishwasher. Really? Say, do you want to work at the Pink Elephant? Okay. What time does he get up? What time does Kevin get up? 6 p.m. आप तो PM बोल रहे हो. नहीं कहाँ पे 6 o'clock. मैंने बोला था पहले ही फुल सेंटेंस आंसर चाहिए मुझे, वन वर्ड आंसर नहीं चाहिए. On the 6 a.m. Kevin gets up at 6 a.m. Okay. Very good. What time does he start work? Kevin starts the work at 11 to 12. He starts work at 11. He starts work at 11. 11 to 1 वो work करता है और फिर उसके बाद में वापस कॉलेज जाता है. Okay. Yep. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon. That is what he says. समझा? But full sentence. Why full sentence? Because we are looking at the same thing that we looked at in the first part of the unit. That is our simple present tense. He's talking about his routine, right? कि वो everyday जो चीज करता है. तो वैसे ही हमारा sentence भी होगा. Kevin gets up at 6 o'clock, 6 a.m. 6 o'clock भी बोल सकते हो. He starts work at 11. Starts. Okay? Important. Understood? Now, second part that we have over here is syllable stress. Now, what do we mean by syllables? Syllables कुछ नहीं, हमारे जो का, की, कू होते हैं ना, तो वैसे ही इंग्लिश में भी हमारे जब पार्ट्स होते हैं एक वर्ड के, तो उनको syllables बोला जाता है. Okay, for example, the word which has been written over there, jumper, right? स्क्रीन पे भी दिख रहा है बहुत लोगों को jumper, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. इट्स अ 2 syllable word, jumper. So जब भी ऐसे कोई words होते हैं, one syllable of it will have more stress than the other. जैसे कि जब हम बोलते हैं word jumper, jumper, correct? तो jump वाले पार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस है, पर वाले पे कम स्ट्रेस है. So it's jumper.
Then जो second word है, it is 3-syllable word. So I will say salesperson. Sales part has more stress, person part has less stress. Salesperson. Okay, same way accountant. Count part has more stress. Accountant. Correct? Very good. So now we are going to listen to the same thing first. Page 11, Exercise 8, Pronunciation. Syllable stress. Part A, listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Answer. Salesperson. Accountant. Page Okay, understood? Now we are going to listen to the second part. Now here you have to focus which stress pattern do these words have, and accordingly you have to add them into the above category which has been given. Okay? तो अगर पहले पार्ट में ज्यादा स्ट्रेस है बट वो अगर 2-syllable वर्ड है तो वो फर्स्ट जंपर के नीचे जाएगा. इफ इट्स अ 3-syllable वर्ड एंड द फर्स्ट पार्ट हैज मोर स्ट्रेस देन इट विल गो बिलो सेल्स पर्सन, एंड इफ इट्स अ 3-syllable वर्ड एंड बीच वाले पार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस है देन इट विल गो एट द एंडिंग वन. ओके, लेट्स ट्राई. 11, Exercise 8, Part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in Part A. Then listen and check. Carpenter. Caregiver. Musician. Reporter. Server. Tutor. Page 12. Got it? Okay. I'm Which repeating the stress same part. pattern do these words have? Add them to the columns in Part A. Then listen and check. Carpenter. Caregiver. Musician. Reporter. Server. Tutor. Okay, so the word dancer, server and tutor, they are in the same category. So your word jumper has been given over here. उसके नीचे server आएगा and tutor आएगा. Okay, 2-syllable words. Then you have salesperson, carpenter and caregiver. ठीक है? Then last one, accountant, musician and reporter. These three go together. Understood? Okay, now coming to the most important part over here where we look at prepositions of time. Now what do we understand by prepositions? Prepositions are words which help us to relate one part of the sentence to another part of the sentence. Okay, for example, if I say the laptop, the table. Okay, but if I say the laptop, the table. ये दो चीजें सेंस बना रही है क्या? Does it make a sentence? No. But if I use the word on, the way Aditya said, if I use the word on, the laptop is on the table, then it makes sense. It connects two of them. Relate कर पा रहे ना हम दोनों को. The laptop बोला और the table बोला, तब दोनों relate नहीं हो रहे ना. दो अलग अलग वर्ड लग रहे या फिर दो अलग अलग सेंटेंस लग रहे, करेक्ट. बट जब मैं बोलती हूँ ऑन द टेबल तब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा है, हम बोल सकते हैं. करेक्ट. So that is how we use prepositions. That is the reason we use prepositions. Okay. Sometimes the sentences could be small, sometimes the sentences could be bigger. Okay. Now, when I talk about prepositions, there are 3 types of prepositions. Anybody knows what are those 3 types of prepositions? No? Okay, आपका कैमरा ऑन नहीं है, ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहे आप लोग. Okay. नहीं, prepositions के टाइप्स पूछ रहे हो, कौन से है वो नहीं पूछ रहे, टाइप्स पूछ रहे हो मैं. अनुजा, you were trying to answer. There are 3 types of prepositions. Hmm? Prepositions of time, prepositions of direction, prepositions of point. Very good. Someone remembers.
Okay, prepositions of time, prepositions of position and prepositions of direction. Direction मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम to या फिर from यूज करते हैं. Correct? I'm going to the market. I'm coming from the office. So ये हमारे directions के हो गए. अभी same way we have prepositions of position कि एक चीज के रिलेशन में दूसरी चीज कहाँ पर है. When I said the laptop is on the table, it is a prepositions of position. Now we are going to look at prepositions of time, which are very very important और जिसमें हम बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं. जैसे कि आपने बोला he gets up on 6, करेक्ट? तो वो गलत हो गया वहां पर. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के लिए हम at यूज करते हैं. At. Okay. Now here we have prepositions at, on, in, then we have around, early, late, until, before, after. ये हम एक एक करके देखेंगे. First one we have at. At हम कब यूज करते हैं? Exact time के लिए. Okay. Whenever you are talking about exact time. What time does our class start? The ones who join late, please answer the question. What time does our class start? At 8 p.m. Our class starts at 8 p.m. Okay. So remember that and join on time from tomorrow. आज मेरे तरफ से भी late हो गया था, so it's fine. Okay. So the class starts at 8 p.m. So here we are talking about exact time. Same way we can use the word at with the word night also. ठीक है? तो हम बोलेंगे at night. In night नहीं बोलेंगे, on night नहीं बोलेंगे. ठीक है? I'll meet you at night. Now, another word that we have is on. On is used with days. सामने दिख रहा है रेखा जी और आदित्य यहाँ पर आज नींद में है पूरे. आज ऑनलाइन वाला एक्टिव है बट ऑफलाइन वाले थोड़े से ऐसे डल है. आई नो इट्स मंडे ब्लूज चल रहे हैं बट थोड़ा सा पेपर खुद को खुद ही करना पड़ता है हमें. Okay. When do we use on? On is used with days. Okay. For example, I will say on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Then we have the word in. In is used with parts of days. Okay. In the morning, in the afternoon, in the evening, but night के साथ में at use होगा. ठीक है? Now same way अगर हम किसी year के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम किसी month के बारे में बात कर रहे हैं तो भी in आएगा. In the month of October in 2020. ठीक है? That is how we will use in. In मतलब अंदर, उसके अंदर हो गया ना. In is used for day. In the morning. On Friday, on Monday. हाँ, दिन के साथ में यूज होगा. हाँ. In the morning, in the afternoon, इनके साथ में parts of days. Only week. So in the week, I will do this in this week. I will complete the worksheets in this week. मतलब इस week में मैं complete कर दूंगा. Okay, correct? Understood? अभी next आता है हमारा around. So when we meet someone officially or for formal purpose, we say at. Correct? The meeting will start at 8 p.m. But जब हम friends को मिलते हैं तब हम at 8 p.m. मिलते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं around. I'll meet you around 8. Correct? आस पास में. So that is how we use around. उस टाइम के आस पास. ठीक है? Then we have early. Early मतलब दिए हुए टाइम से पहले. ठीक है? And late means दिए हुए टाइम के बाद. Now until. This is very confusing. Listen carefully. Until मतलब उस टाइम तक. Okay? Our class will go on until 9 p.m. तो उस टाइम तक. I stay up until 1 o'clock. मतलब मैं 1 o'clock तक जगती हूँ. Sorry? Till भी यूज होता है, until भी यूज होता है. Till हमेशा from के साथ में यूज होता है. Okay? But अगर from ये word नहीं है हमारा तो हम until यूज करते हैं. From and till they go together. Okay? That's where we talk about duration. From and to भी बोल सकते हैं, from and till भी बोल सकते हैं. ठीक है? Our class is from 8 o'clock to 9 o'clock.
बट अभी मैं सिर्फ उस टाइम तक की बात कर रही हूँ ना, कब स्टार्ट हुआ उसकी बात नहीं कर रही हूँ. तो आई विल यूज अंटिल. आवर क्लास विल गो ऑन अंटिल 9 PM. ओके, तो उस टाइम तक ऐसे याद रखो, उस टाइम तक. और मराठी वाले याद रख सकते तो पर्यंत. ओके, सॉरी, ऑन और अंटिल अलग हो गया ना. अंटिल मतलब उस टाइम तक ना, उस टाइम तक ये चीज चलेगी, हम बोलते हैं ना. तो ऑन कहाँ से आ गया? ऑन और अंटिल एक साथ में जा सकते हैं क्या, वो आप पूछ रहे हो? हाँ, कभी कभी जा सकते हैं. गो ऑन, यहाँ पर मैं गो को सपोर्ट करने के लिए ऑन यूज कर रही हूँ. ओके, तो वो थोड़ा सा अलग रूल आ जाता है कि सम वर्ब्स नीड सम prepositions विद देम. ठीक है, अभी के लिए अंटिल का थोड़ा सा ध्यान करो. आई विल रीच होम, नहीं, आई विल बी होम अंटिल 4 o'clock. ठीक है. यस, कुछ पूछ रहे थे आदित्य, समझ गए? ओके. आदित्य को बहुत नींद की जरूरत है फिलहाल. देन आता है बिफोर. बिफोर भी उस टाइम के पहले एंड आफ्टर भी उस टाइम के बाद. सो दैट इज वे से बिफोर, दैट इज व्हाई वी से बिफोर नून मतलब 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे के पहले. एंड आफ्टरनून मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आफ्टरनून. ठीक है. फिर सेम वे अगर हम, हाँ, आफ्टर 12 o'clock, बिफोर 12 o'clock. ओके, आई विल क्लियर दिस डाउट आफ्टर 9 o'clock. मैं बोल सकती हूँ, करेक्ट. तो होता है. तो उस टाइम के बाद में या तो उस टाइम के पहले. ओके. देन आता है हमारा वीकेंड. आफ्टर के साथ में, बोलो बोलो बोलो, आफ्टर के साथ में, आफ्टर दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू. हाँ, बराबर है. उस चीज के बाद. तो दैट दोज कब यूज करते हैं हम थर्ड यूनिट में देखेंगे. फर्स्ट पार्ट वही है हमारा. ठीक है. आफ्टर दैट, हाँ, आफ्टर 8 o'clock. ठीक है. फिर आता है वीकडेज और वीकेंड्स. वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे. कुछ लोग लकी होते हैं, उनका फ्राइडे भी छुट्टी रहता है, सो दे कंसिडर फ्राइडे आल्सो एज वीकेंड. बट हमारे लिए मंडे टू फ्राइडे इज वीकडेज एंड सैटरडे संडे इज वीकेंड्स. ओके. नाउ यहाँ पर आप देखोगे कि ऑन सैटरडेज, ऑन संडेज यूज किया गया है एग्जाम्पल्स में. नाउ व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेपिटेशन. हम बार बार कुछ चीज करते हैं तो हम प्लूरल उसको यूज कर सकते हैं. ऑन संडेज आई वेक अप लेट. तो हर संडे की बात कर रही हूँ ना मैं, तो इसके लिए. बट अदरवाइज मैं एक ही संडे की बात कर रही हूँ. आई विल मीट यू दिस संडे, तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा ऑन संडे. बट यहाँ पर मैं अगर हैबिट की बात कर रही हूँ तो संडेज हो जाएगा. ऑन संडेज आई कंडक्ट क्लास एट 12 o'clock. मैं कोई क्लास नहीं लेती हूँ संडे को, प्लीज कॉल मत करना मुझे कोई क्लास के लिए. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ओवर हियर. इट वाज इमेजिनरी सेंटेंस. इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू वी एक्सप्रेस क्लॉक टाइम. मतलब हम टाइम कैसे बताते हैं. यस, ओके. ऑन इज यूज्ड विद डेज. ओके, ऑन इज यूज्ड विद डेज. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. For example, I will say you have a test on Monday. ठीक है. So now you will remember the example. You have a test on Monday. ऐसा अगर मैं बोलूँ तो on use करूँगी, वहां पर in नहीं use होगा. ठीक है. Understood? Yes. हाँ. On is used with days. Then again when we say weekdays, weekends, उसके साथ में भी on use होता है. देन आता है हम क्लॉक टाइम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्लॉक टाइम कैसे बताएंगे. देयर आर वेरियस वेज इन विच वी कैन से क्लॉक टाइम. बट वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज जो ओ क्लॉक पार्ट यूज होता है ना, ओ क्लॉक, वो हमेशा राउंड टाइम के साथ में यूज होता है. ओके, आई कैन नॉट से 6:30 o'clock. इट्स इनकरेक्ट. आई विल से 6 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock. ठीक है. उसके बाद में हमारा आ जाता है 7:10, 7:05, 7:15, 7:20. Correct? Then we can say 6 a.m. or 6 p.m. also, or we can also say 6 in the morning or 6 in the evening. If I tell you tomorrow the class will be at 6, then आपका पहला क्वेश्चन वही आएगा ना, in the morning or in the evening.
करेक्ट 6 o'clock फिर भी जल्दी हो गया. चलो इफ आई से टुमारो क्लास विल बी एट 8, कंसिडर करो कि अपना टाइम 8 o'clock नहीं है. एंड इफ आई से टुमारो द क्लास विल बी एट 8, सो आपके दिमाग में पहले आएगा इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. तो दैट्स व्हाई इट्स गुड टू मेंशन, उसके पहले मेंशन कर दो इन द मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग. टुमारो द क्लास विल बी एट 8 इन द इवनिंग और 8 PM. ठीक है. AM इज, AM हम कब यूज करते हैं? रात के 12 बजे के बाद और दोपहर के पहले, बराबर. एंड PM हम दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक यूज करते. तो अभी AM है कि PM है? अभी PM है. आज आदित्य को क्वेश्चंस पूछने में बहुत मजा आ रहा है मुझे, सारे गलत आंसर्स आ रहे हैं उसके. ओके, दूसरा आ जाता है व्हाट इफ आई से इट्स 8:45. इट इज 8:45. उसका मीनिंग क्या हुआ? 9:45. 8:45 बोल रही हूँ मैं. 8:45. ये सभी कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द रीजन. मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, मुझे भी टाइम लगता है. आप अगर ऐसे बोलोगे ना डायरेक्टली हम 8:45 पे मिलेंगे या फिर 8:29 में मिलेंगे, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. दैट इज रीजन आई एम कवरिंग दिस पार्ट फॉर यू. क्वार्टर मतलब क्या होता है? पिज्जा कंसिडर करो आपका. एक पिज्जा है पूरा, उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 स्लाइसेस आते हैं छोटे वाले पिज्जा के. करेक्ट. तो वो जो एक पार्ट है वो एक क्वार्टर है. सेम वे आवर क्लॉक इज यूजुअली राउंड. हाँ कि नहीं? क्लॉक राउंड होता है ना, तो उसमें जैसे 15 मिनट्स होते हैं तो 15 मिनट्स का एक क्वार्टर कंसिडर किया जाता है. ओके. क्वार्टर हम पार्ट्स वाला क्वार्टर बोले, और कोई क्वार्टर मत समझना. यस. तो हम क्वार्टर कंसिडर कर रहे हैं उसका. ठीक है. तो 1/4 ऑफ इट इज कंसिडर्ड, पूरे पार्ट है 4 पार्ट्स है, उसका 1/4 मतलब एक क्वार्टर हो गया. सो जब 8:45 बोलते हैं तब यहाँ पर 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 8:29 मतलब 9 o'clock होने को 15 मिनट्स बाकी है. ओके. क्वार्टर आफ्टर 9 और क्वार्टर पास्ट 9 अगर मैं बोलती हूँ तो उसके बाद में. समझ गए? सेम वे विल से 7:45, 8:45, 9:45. क्वार्टर पास्ट या फिर 8:45 आफ्टर 9 हो गया तो 9:15 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वार्टर वर्ड पे फोकस नहीं करना है, जो बीच वाला वर्ड होगा ना प्रीपोजिशन यूज आफ्टर या फिर टू, उस पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. बट हमें ट्राई करने का यूज नहीं करना है. इट्स बेटर टू से 9:15, 9:20, 9:30 and 8:45 because वो सभी कंफ्यूज होते हैं इंडिया में. But yes, when we deal with foreign clients, we should know because they have the tendency of using these words. ठीक है. So we should know कि कैसे यूज होता है, but हम जब यूज करते हैं we can use simple English. Understood? Easy? Okay. Write down whatever you can see on the screen quickly. हाँ, वो आपकी बुक में भी है, आपके नोट्स में भी है. हाँ, ये आपको लिखना है. ओके. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सिंस कब यूज होता है? सिंस कब यूज होता है? एंड फ्रॉम कब यूज होता है? वेट में कौन, फॉर कब यूज होता है? मैं खुद वर्ड. हाँ, टाइम के लिए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में ही आता है वो. ओके. मैंने शायद बताया था आपको, इसके लिए आपको पता है. कृष्ण जी सॉरी, प्लीज रिपीट. आदित्य वाज गिविंग द आंसर. ओके. शायद मैंने ये क्लास में बता दिया था, ये लगता है पहले ही, इसीलिए आप लोगों को आंसर पता है. ठीक है. फ्रॉम, सॉरी, फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन. ओके. यस. कृष्ण जी आपका आवाज कट हो रहा है बहुत ज्यादा. You can't hear me.
Krishan ji, am I audible? Am I audible to others? Okay, Abhishek, your camera is off. I can see you. Huh? So for is used to talk about duration of an action. Okay. Whereas since is used to talk about the start point of that action. So for example, I can say I have been speaking continuously since 4 p.m. I have been speaking continuously since 4 p.m. So start time क्या है? 4 p.m. उस time को वो at that exact time, that action started and it is still going on. One thing more important is that कि वो action अभी तक होते आ रही है. Okay, so it is still going on. अभी भी action वो चालू है. Then for आ जाता है. For is used to talk about duration. I have been speaking for 5 hours now. Krishan ji, you can. Voice is breaking, Krishan ji. Just 1 second, I'm going to. हाँ मैं रिपीट करती हूँ आप लिख लो पहले फिर मैं रिपीट करती हूँ Krishan ji, you can be on mute. We can't hear you. हाँ अभी तो बात ही कर रहे Done? Okay. Explaining for and since again. Since हम कब यूज करते हैं कोई एक्शन जो अभी तक चालू है बट हम उसके स्टार्ट टाइम को रेफर करके we will use since. For example, I have been speaking continuously since 4 p.m. तो 4 p.m. ये स्टार्ट टाइम है तो स्टार्ट टाइम यूज करूंगी मैं और अभी तक वो एक्शन हो रहा है सो दैट इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वो एक्शन अभी भी चालू है तब हम सिंस यूज करते हैं ओके for is used to talk about duration of an action so I will say I have been speaking continuously for 5 hours now 5 hours के लिए मैं कंटिन्यूस बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं कितने टाइम वो एक्शन हुआ उस पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ ओके हाँ duration whereas since will be used for with start time or with start time वो एग्जाम्पल लिख दो आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस 4 p.m. और स्पीकिंग फॉर 5 hours तो वो आपको याद रहेगा फिर अंडरस्टूड यस कृष्ण जी करेक्ट एक्सरसाइज I have been. कृष्ण जी आपका आवाज अभी भी कट हो रहा है can't you hear you clearly I just explained the rule
I just explained the rule. Okay, you guys can start doing the exercise now. समझ में आया सबको how for and since is used? You can start doing the exercise. Here you just have to circle the correct word. The ones who have connected online, you can just write down the correct word. ठीक है, दो ऑप्शंस दिए, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है. फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. फॉर एग्जांपल, आई गेट अप एट एंड अंटिल दिया है बट 6 है तो एट 6 होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एट और ऑन का ऑप्शन दिया है बट वीकडेज है. तो लुक एट द एग्जांपल्स इफ यू गेट कंफ्यूज्ड. ऑन वीकडेज. वेरी गुड अनुजा. दो ऑप्शंस दिए ना, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है. जो बोल्ड में है ना, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, उसको सर्कल करना है जो राइट आंसर है. हाँ, डबल है. दोनों साइड I have lunch at 11 to 30. 11:30. On Monday. Very good. On Correct. Monday. Correct. Around 10 at night. Very good. Correct. Correct. On Friday. Write the answers also, guys. On Fridays I leave school early. Correct. I stay up until 10 a.m. on weekends. On weekends. Correct. I sleep until I sleep until noon on Sunday. On Sundays. Very good. अभी यहाँ पर until around दोनों आ सकते हैं. like कुछ लोग उठ के भी सो सकते हैं वापस एंड कुछ लोग सोते ही रह सकते हैं मेरे जैसे. तो बोथ आर करेक्ट. until मतलब उस टाइम तक. तो आई स्लीप until noon मतलब मैं नून तक सोती हूँ. Understood? Guys, any questions? Yes, no? मैम ये ऑन के साथ पास्ट टेंस करना है. नहीं, क्यों? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस क्यों कर रहे हैं? क्यों कौन से टेंस चेंज कर रहे हो? आंसर में कोई टेंस चेंज नहीं होगा. अब अदरवाइज पूछ रहे हो क्या? इन जनरल पूछ रहे हो? अच्छा, इन जनरल क्या सेंटेंस था? वापस बताओ. आपका भी आवाज थोड़ा कट ही हो रहा है, बट बताओ सेंटेंस. हाँ, बराबर है. आई वॉज वर्किंग फॉर लास्ट 10 hours. करेक्ट. बट आई वॉज वर्किंग जब बोलोगे तब वो एक्शन अभी खत्म हो गया. फिर हाँ, आई एम वर्किंग फॉर 10 hours now. Okay, now you guys have to ask each other questions. जो पार्ट सी में क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस एक दूसरे को आपको पूछने हैं. सॉरी, since में टेंस चेंज होता है. since is not used with our simple present tense. since is not used with present continuous tense also. since is used with only हम एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं ना कि I'll be there since last हाँ, I have been there since last Friday. you are last होता है. Since और last, it's a very big debate. Last और past बहुत बार नहीं यूज होता है, बहुत बार यूज होता है. So let's not get into that debate right now. ठीक है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि लास्ट और पास्ट सिंस के साथ में नहीं यूज होता. कुछ लोग बोलते हैं कि सिंस के साथ में लास्ट और पास्ट यूज कर सकते हैं करके. So there's a very big debate on it. ठीक है? तो सिंस लास्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. We can just use since. Understood? Okay. Now you guys have to ask each other questions. The questions which have been given in part C. Can you guys see it on the screen? These questions. ठीक है?
दिस पार्ट जस्ट द पॉइंट इज कि आप लोगों को एक दूसरे के नाम लेने और क्वेश्चंस पूछने हैं तो द पर्सन नोज दैट दे हैव टू आंसर who is going to start first okay Arjun you can start here in offline you have Aditya and Rekha ji so you can ask questions accordingly ठीक है Yeah. I would like to ask question to Anuja. Anuja, which day do you get off early? Monday to Monday to Friday. full sentence full sentence सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मत भूलो मंडे फ्राइडे सब लास्ट में आएगा Which day? I get up early in the morning, Monday to Friday. Isn't it? ऑन वीकडेज बोल सकते हो ना सिंपली Yes, on weekday. And late. Okay. And late Saturday and Sunday I get up ऑन वीकेंड्स on. I get up late on weekends okay Okay. very good now Anuja you can ask the next question Abhishek, what's something you do before 8 in the morning? what is something Generally, go on generally I wake up at 8 a.m. in the morning in weekdays, all weekdays, and yes, that's I'm sleeping before 8. okay next Abhishek you can ask the next question I want to ask you, Aditya, what do you do on Sundays, Aditya? what do you do only on Sundays Saturday, only on Sundays. last fourth question पूछ रहा हूँ आपको Generally, I am on Sunday. My most of time spent on sleeping. The rest of time is going asking myself. repeat your answer please repeat your answer in one go One. तोड़ तोड़ के नहीं बोलना एक साथ में बोलो sentence Generally, I am कहाँ से आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में am नहीं यूज होता हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में generally I use say the full sentence तब बताओगे ना करेक्ट वर्ब है कि नहीं on Sunday first I sleep a lot. The second half I upgrade myself, upgrade my skill. Okay, and at evening, in evening, I used to moving here and there, and with fun activity. And after that, I am on after 9 p.m. I am on the bed and waiting for the Monday. वेटिंग फॉर मंडे आदित्य जी पहले से इंसानों के जो वेट करते होंगे मंडे के लिए हम उससे वेट नहीं करते हम बोलते मंडे जितना लेट आए उतना बेटर है हमारे लिए ओके ओके used to is used only when we are talking about past में हम कोई एक्शन करते थे बट अभी हम वो एक्शन नहीं करते ओके used to ठीक है वो ed ऐड हो जाता है बट वो ed थोड़ा साइलेंट होता है used to तो पास्ट में हम कोई एक्शन करते थे बट अभी हम नहीं करते तभी हम यूज टू यूज करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस तो मेरे पास में एक्शन रिपीटेडली करती थी हैबिट थी वो मेरी बट अभी मैं वो यूज नहीं कर रही ओके मैं अभी वो एक्शन नहीं कर रही तब वो यूज टू हमारा यूज होता है समझे ओके नेक्स्ट नाउ आदित्य यू हैव टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन My question to Neha, Rekha. तो नेहा कौन है मुझे पता नहीं ये हमेशा नेहा बोलते हैं आपको
What is something you do on the Saturday evening? You do on Saturday. You do on Saturday evenings. You do on Saturday evening. I do spend. Do की जरूरत नहीं। आप पूरा सेंटेंस बोलो मैं बता दूँ आपको करेक्शन। I do spend time with. I spend time I spend time on Saturday with my children. with my children on Saturday. My kids, children दोनों भी बोल सकते हो। Kids थोड़ा सा informal है, children formal है। और kids मतलब कंगारू के बच्चे भी होते हैं। With children, क्योंकि children already plural है, child singular होता है, children plural होता है, तो उसके साथ में वापस s नहीं आएगा। Okay, so on. I spend time with my children on Saturday evenings. Okay, very good. Rekha ji, now you have to ask question. कौन बचा हमारा? अनुजा हो गई है, अभिषेक हो गया है, कंचन जी और कृष्ण जी। किसी एक से आप पूछ सकते हैं। Kanjan ji. What do you do only on Sundays? What do you do only on Sundays? So I used to wake up late on Sundays till afternoon, and later I spend time with my kids. Okay, Sorry, so my children. ओके सो यूज टू देखो वापस अपने यूज टू अभी के एक्शन के लिए यूज किया, अभी के एक्शन के लिए यूज टू नहीं यूज होगा। आप अगर ऐसे बोलते हैं आई यूज टू गेट अप लेट बट नाउअडेज आई एम ट्राइंग टू गेट अप अर्ली, ऐसे आप बोल सकते हो कि पहले मैं ये चीज करती थी बट अभी मैं थोड़ा जल्दी उठने की ट्राई करती हूँ। सर मैंने क्यों किया आई यूज टू वेक अप लेट ऑन संडेज बट आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली ऑन संडेज सो आई कुड यूज दैट टाइम। सो तो फिर वहां पर अलग हो जाता है, बट यहाँ पर आप अभी जो चीज कर रहे हो वो बोल रहे हो ना, तो you'll have to rephrase the sentence. Try again, Kanchan. Okay. I used to get up late, but nowadays I'm trying to get up early in the morning, and I'm going to I spend quality time with my kids. Okay, very good. Now, Kanchan, you have to ask question to Krishan ji. I hope he'll be able to unmute and answer. Krishan ji, I'm going to mark you absent. Reiterating that. Krishan ji, सर ईयर ओनली नहीं, मुझे कैमरा ऑन चाहिए, मुझे आप दिखने चाहिए है मेरी हिंदी। आई नीड टू सी यू। ओके हाँ, it has been said multiple times. अभी हमारा कितना पता नहीं, 5th सेशन। Okay, can't hear you clearly. Okay, no worries, Kanchan ji. Krishan ji is not able to answer. Yeah, please take care of it tomorrow and make sure I see you on screen. ठीक है? Okay, next. आप मेरे सामने नहीं हो फिर भी मुझे आप दिख रहे हो. I join from 2 devices always. Remember that. Everyone should know that. There is some network issue, Krishan ji. Others can hear me clearly, right? I can hear you clearly. I think there is some issue with the device or maybe with the network. I think my voice is not audible. Okay. Others, can you guys hear each other? Abhishek, आप अर्जुन जी और कृष्ण जी को सुन पा रहे हो? सबका आवाज आ रहा है ना, एक दूसरे का आवाज आ रहा है ना? Sorry, please repeat. I can hear everybody. Okay, next we have listening task next. 1 second. Next we have a listening task. Here I am going to play the audio. You have to listen to daily schedules of Greg, Megan and Laurie. Okay, you have to listen to daily schedules of Greg, Megan and Laurie
who are talking, of course, about their daily schedule. You have to listen to it. You have to write down the job that they do. वो कितने बजे उठते हैं? What time do they get up? What time do they get home? And what time do they go to bed? ठीक है? यहाँ पर आप one word में आंसर कर सकते हो, but make sure you use the correct prepositions. If like वो थोड़ा practice हो जाएगा, ठीक है? Understood? Shall I play the audio? Yes. Okay. Yes. Page 12, exercise 10, listening, daily schedules. Part A, listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. Oh, yeah? So, what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons. I get up around 6 a.m. and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9 to 5 office job. So, I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So, what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30. And I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Did you guys get their schedules? सबके? Repeat. Who wants repetitions? Who wants a repetition? Kanchan, Anuja, Abhishek, Arjun. सबको आंसर्स मिल गए? Okay. रेखा जी wants repetition. थोड़ा सा I'm going to rewind. किसका लॉरी का मिस हो गया ना? कि सारे मिस हो गए? No, Lori का job complete हो गया. हाँ. Get up, Okay. get home, then do something. It's a regular 9 to 5 office job. So, I get up at 7 a.m. Megan का. and get home around 6 p.m. This is Megan. That's okay though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So, what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30. And I sleep until 4 p.m. Get up, बता दो मैं. Lori, get up. Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Okay. So Laurie has a different schedule. Okay, why? Because she works night shifts. That's the reason. So Laurie is a nurse. She gets up at 4 p.m. She gets up at 4 p.m. मतलब शाम के 4 बजे. Okay, and she gets home at 8 o'clock, 8 a.m. 8 a.m. Okay, and she goes to bed at 8:30 a.m. 8:30 in the morning. Megan, she is a receptionist. She gets up at 7 a.m. She gets home at 6 p.m. and she goes to bed at midnight. जो मेरा schedule हुआ करता था एक time. Okay, next is Greg, who is a mechanic. He gets up at 6 a.m. He gets home at 4 p.m. and he goes to bed a little early, that is 10 p.m. Okay. Understood? Okay. Try answering the last question now. That is, who has the best schedule? Who do you think has the best schedule and why? You have to give reason.
According to you, सबके आंसर वेरी करेंगे. There is no right or wrong answer in this. She's get up at 7 a.m. and schedule will be over around at 6 p.m. Correct. She gets almost 6 hours for herself. Correct. Okay. Aditya, what do you think? Correct. Aditya, what do you think? Who has the best schedule? According to me. Greg. Has a proper time. Means he gets up at 6 p.m. Mm-hmm. and work until 8 p.m. Mm-hmm. And after that he goes to bed at 10 10 p.m. p.m. So He has plenty of time. Correct. Correct. He has plenty of time. Plenty मतलब काफी time है उसके पास. Plenty. Okay. Rekha ji, what do you think? 1 minute, guys. According to me, Megan is a receptionist, Mm-hmm. and she get up 8 to 7 a.m. You have to tell who has the best schedule according to you. तो best schedule किसका है वो बताना है आपको. According to you, of course. For example, if you ask me, the way you said right now, according to me, Megan has the best schedule because she gets free at 6 p.m. and she has time until midnight for herself. That is why I feel that's the best schedule. Correct? According to me, Megan has the best schedule because she gets free at 6 p.m. She gets home at 6 p.m. and she has time until midnight. जो मेरा शेड्यूल एक टाइम पे हुआ करता था, मैंने used to work in MIT. That's when I started taking classes. Yes, Arjun, you want to answer? Yeah. Please go on. Actually, as per my view, there is a good schedule of girls. You know, Greg. is a mechanic. Greg. Is a hard worker. He gets up at early. Hello. Greg. Yes, you're audible. Go on. Yeah. So girls is is at like get at morning at he work he gets home at 7 when Your voice is breaking, Arjun. even Arjun, your voice is breaking. hello. Sorry, what? Yeah, now it's audible. So even he goes to bed at early as possible. Correct. So you will not say as per my views, according to my point of view. You can say according to my point of view, or according to my perspective, or according to me. As per my view, I don't know. It's not correct English. It doesn't sound good. Okay. According to me, or according to me, or as per my point of view, or according to my point of view. Okay. Okay, next part you have reading part which you will do for homework, and all the remaining exercises you will do for homework. Okay? Yes, Kanchanji. आपने जैसे explain किया था मेरे के बारे में, like she free at 6 p.m. and she used to get time until वापस use to use करिए, use to नहीं use होगा यहाँ पर. Use to अभी नहीं use करना है हमें. वो मेरा frequently use करता है. नहीं अभी के लिए अवॉइड करो. Correct sentence के बाद हाँ. मैंने जो बोला वो सेंटेंस वापस बोलती हूँ मैं. According to me,
और अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव मेगन हैज द बेस्ट शेड्यूल, बिकॉज क्वेश्चन ही वैसा है ना। तो हमेशा देखो क्वेश्चन आंसर जब करते हैं ना हम, तब क्वेश्चन का आधा पार्ट हमेशा आंसर में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी मेगन हैज द बेस्ट शेड्यूल। सो यहाँ पर देखोगे डू यू थिंक के बाद का पार्ट मैंने ऐड कर दिया, हैज द बेस्ट शेड्यूल, ओके। और उसके बाद में मैं उसका रीजन दे रही हूँ जो कि वाई को आंसर करेगा, बिकॉज शी गेट्स फ्री बाय 6 PM एंड शी हैज टाइम अंटिल मिडनाइट which she can use for herself. सिंपल सेंटेंस यूज किया मैंने भी कोई ऐसे शशि थरूर वाला इंग्लिश नहीं यूज कर उसको कब करना चाहिए? क्योंकि यूज थोड़ा confuse हो रही है। यूज तो अभी के लिए यूज ही मत कीजिए अब, ठीक है। अभी 7th यूनिट तक हमको पास्ट टेंस को देखना भी नहीं है, ठीक है। यूज टू हम यूज करते हैं पास्ट में हम कोई एक्शन रिपीटेडली करते थे, ओके। पास्ट में कोई एक्शन जैसे कि आई यूज टू स्टडी इन सेंट मीरास कॉलेज, तो वैसे याद रख लो। आप अभी कोई स्टडी कर रहे हो क्या मेरे अलावा? मैं ही हूँ अकेले यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हो अभी भी, आप लोग कोई भी स्टडी नहीं कर रहे हो अभी, करेक्ट। तो वैसे याद रखो कि जब हम कॉलेज में थे, अगर उस चीज की हम बात कर रहे हैं, तब के टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं कुछ, तो हम यूज टू यूज करेंगे, ठीक है। आई यूज टू लिव इन कोटा, कोटा कोटा कोटा, हाँ मैं कोटा में रहा करता था, वैसे यूज टू यूज होगा, ओके। आई यूज टू राइड अ बाइक, आई यूज टू स्टडी फॉर 12 hours. I used to study for 12 hours. करेक्ट। तो वैसे याद रखो आप कि तभी यूज टू कि पास्ट में कोई एक्शन हम बार बार एज अ हैबिट करते थे, बट वो एक्शन अभी हम नहीं करते, तो तभी हम यूज टू यूज करते हैं, समझे? यूज टू, USED पास्ट टेंस आता है, वो यूज टू एंड टू आ जाता है उसके आगे, ठीक है। कि हमको ये चीज बार बार करते थे, उसलिए हम यूज करेंगे, अंडरस्टूड? अभी कोई क्वेश्चन होगा तो कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज 9:15 हो गया है, सबको लेट हो गया है, यस। ठीक है, चलो let's meet tomorrow then. If you guys have any doubts, we'll discuss tomorrow at the start of the class. Second thing that we discussed on Friday or Thursday, I don't remember कब हमने डिस्कस किया था, बट तभी भी सारे स्टूडेंट्स नहीं थे। हम शायद हमारा क्लास मंडे टू सैटरडे रखेंगे, बट सैटरडे को सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, जहां पर हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा सा। बट अगर ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट रहा तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम, ठीक है। ऑनलाइन गाइस शुड बी हैप्पी, ऐसे ये पी चिल्लाना चाहिए था आप लोगों ने। आप लोगों के लिए एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने, बट अकॉर्डिंग टू ऑफ कोर्स माय अवेलेबिलिटी आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द डेज वी हैव इट, ठीक है। ओके गाइस, सी यू देन, गुड नाइट, बाय बाय, प्लीज कंप्लीट द एक्सरसाइजेस, बाय।